कोशिश करूँगी, लेकिन मैंने ना गणित हिंदी में पढ़ी नहीं है मैंने अंग्रेजी में पढ़ी है, इसलिए मेरे को बहुत मेहनत लगेगी। ऊपर से दिस इज अलजेब्राइक ज्योमेट्री इज व्हाट जो मैं जिसमें काम करती हूँ जनरली, मेरा रिसर्च एरिया है, और वो तो मैंने जितनी भाषाएं हो सकती है उसमें पढ़ा है, हिंदी नहीं है उसमें से so I can do it in French if you want, but it will be very difficult. French, German will work, but I cannot do it in Hindi. ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए अलजेब्रा और ज्योमेट्री, एंड आई हैव रिटन नेम्स ऑफ 2 मैथमेटिशियंस। ब्रह्मगुप्त, जिसको आपने कल सुबह से देखना शुरू किया है, अभी भी देखेंगे। So he was a mathematician in 628 CE, where well I will write 1 year. He was around this time, and in this time he wrote this Brahmasputa Siddhanta. BR So Brahmagupta Brahmasputa Siddhanta. So it's a text in astronomy, it's a text in algebra, it's a text in geometry. Okay, it's a text in what we call mathematics with everything. Okay, and Neena Gupta is a mathematician you should be able to Google about. Okay, she is a current mathematician in ISI Kolkata. She is a PhD student of Amartya Datta, who will be speaking tomorrow in the afternoon. Online session, Amartya Datta's PhD student. So I will talk about their work basically, and why I want to talk or give you this session today, which is basically completely out of school education syllabus. This is because one part is, if you don't even know what is happening currently in mathematics, you cannot prepare mathematicians for it, right? आप बच्चों को वो सिखा नहीं सकते ना जो आपको पता नहीं है, और जो चीज़ अभी चल रही है currently, what mathematicians अभी काम कर रहे हैं जिन चीज़ों पे, if the school teachers are not aware, मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे बच्चों को बता पाओगे कि मैथ्स वाले ये काम करते हैं, ठीक है? So it's a very simple talk. You will be able to understand. We will not do anything complicated. The complicated stuff will be hidden away. Okay, and I will explain you very simply ki what is the gist of work of almost a lot of fields medalists on the go. Okay, including Manjul Vargas. ठीक है, उसका नाम आप 2 दिन से सुन रहे हो, वो आपकी NEP भी लिख चुका है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना उन्होंने क्या किया क्यों लिखने को दिया उनको NEP. ओके, सो यू नो राइट कि आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और अभी सब टेक्स्ट बुक्स है, मंजुल भार्गव इज द पर्सन हु इज चेयरिंग कमिटीज फॉर राइटिंग इट. ओके ओके, बाय द वे, डिड यू मैनेज टू डू दिस? वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. हो गया, बन गया आपका स्क्वायर, या हाँ एरिया स्क्वायर रूट 2 के साथ किसी का हुआ? नहीं हुआ? ऐसा क्यों? अच्छा ठीक है. सो to get a square of area square root 2, I need to have a side length of 4th root of 2. ठीक है? That is all. So basically all I have to be able to construct is 4th root of 2. ठीक है? First construction that you have learned in school is given a length A. Okay? Let me comment also on the length, a notion of so you can construct square root A length using compass. Do you know how? नहीं ठीक है, I can work with boundary conditions. हाँ. तो ये कैसे करेंगे? ये कराया आपने कंस्ट्रक्शन का भी? सेमी सर्कल सुनाई दिया मुझे, किसी ने तो सही बोला है ना? हाँ बोलिए. एक और एक के साइड वाला चौरस से हम अंडर रूट 2 लेके अंडर रूट 2 पहले डिफाइन करेंगे.
नहीं, √2 की भी कोई जरूरत नहीं है आपको, कोई भी ऐसे कर लो आप. नहीं, एक हमारी 90 बुक में है, अंडर रूट डिफाइन करेंगे. I like this like reasoning. Okay, I will interrupt you. एक मिनट. हाँ, जो बुक में लिखा होता है ना वो एग्जाम्पल होता है, पर हम आगे जा सकते. ये कंस्ट्रक्शन में है. अच्छा करो. अंडर रूट 2 कंस्ट्रक्ट करेंगे. हाँ, कैसे? one unit perpendicular 1 unit. Hypo is under root 2. Now add 1 into under root 2. Add 1 into under root 2. है? 1 कहाँ पे? 1 unit. Add 1 unit into under root 2. किधर? This is going to be okay. I can already see कि ये नहीं होने वाला है, ठीक है? जल्दी से करिएगा. Okay. I will. This is under root 2. हाँ. We can add 1 unit. हाँ. 1 unit into under root 2. Now we find out middle point of this. हाँ, correct. Now semicircle. Correct. This will under root 2. हाँ. और- हाँ, correct. यहाँ से सर्कल बनाएंगे, ये भी होगा अंडर रूट 2. ये होगा. हाँ, तो ये करेक्ट है. ओके, दिस इज करेक्ट. सो व्हाट ही डिड वाज, अब ये 2 का इधर कोई स्पेशल काम नहीं है, ठीक है? 2 इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, कैन रिप्लेस इट बाय ए, ठीक है? बट व्हाट इज ए? ओके, द क्वेश्चन इज what is a or what can possible values can a take? Okay, नहीं any नहीं ले पाएगा. So first thing you have to note is let's fix some notion of unit length, ठीक है? So I fixed some unit length 1. So this length is called 1. Okay, so now a length is some multiple of this length. Okay, now the question is how will I create multiple of a, मतलब a multiple length, ठीक है? So if it's an integer, मतलब अगर आपका 1 2 3 इस टाइप का है तो बस आप ऐड करते चले जाओ सेगमेंट्स के आगे आगे, तो सारे इंटीजर नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है? सारे रूट्स भी आ जाएंगे क्योंकि अब आपके ये नंबर्स आ गए तो सारे स्क्वायर रूट्स आ जाएंगे, सब पॉइंट्स नहीं आएंगे. रैशनल नंबर सारे आ जाएंगे. सो यू कैन कंस्ट्रक्ट, this is an exercise for you, later you can do. P नहीं, irrational भी हो सकता है. So what you have started with, a rationals are okay, you can construct, and a you can also take to be roots or any kind of square roots. Repeated square roots भी सारे आप a के construct कर लोगे where a is a rational. And my claim is that's it. Okay, इसके ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप. हाँ, that is fine, but I am saying, हाँ, लेकिन सारे irrational नहीं आएंगे क्योंकि there are lot more irrationals. For example, cube root 3 of 2, ये नहीं आप बना सकते. Okay, ये नहीं बनेगा आपसे. This you will not be able to do with a circle, with a compass or a ruler. Okay, exercise, घर जाना आप करना ये try, ठीक है? So what is happening here? It's a property of circle that I am using, and it's a property of straight lines that I am using. Okay, these are basic objects. ठीक है, circle and line आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा. What is so special about circle? How do you define a circle? Circle क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है? और लाइन क्या होती है अपनी? लाइन कैसे डिफाइन करते हैं? ओके, ठीक है, लाइन के बारे में आप विचार करिए कि लाइन क्या चीज है. सो हाउ डू वी डिफाइन लाइन?
It's a bigger debate. Okay. So I want to define a line and define a circle. So let me bring in a tool. Okay? To make our life very easy, I will ask algebra to come in. Okay? So this is where very simple stuff. Line is something which is solution set of this equation. ठीक है? अभी क्या आया अचानक? Oh, now can you tell me? और ये x square plus y square is equals to r square, और in more general x minus a whole square plus y minus b whole square is equals to सेंटर ए बी है. ओके, अभी हमने बहुत कुछ कर डाला इतनी सी चीज लिखने में. We took leaps in development of mathematics. Okay, first we relied to make precise geometrical things. We relied on a tool called algebra. Algebra was essentially developed in this way, and this was developed by starting with Brahmagupta. Okay. And what do you teach in algebra course? Algebra में क्या पढ़ाते हैं आप? पढ़ाते हैं algebra 9th के syllabus में है, ठीक है, मैंने देखा है. 9th में algebra में क्या पढ़ाते हैं? किस चीज की? कैसे? Polynomials. Okay, the word is polynomials. Okay, polynomials and polynomial equations. Okay, I will write it only in this way. Okay, polynomials and polynomial equations. इधर ही आ गई सर. Polynomial क्या है? What is a polynomial? Polynomial is some expression of the form a x to the power n plus b. चलो a n ले लेते हैं. a n minus 1 ये हो गया n minus 1 डॉट 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 a0. ये एक पॉलिनोमियल है और ये भी है a n1 n2 x y n1 n2. ठीक है, नहीं दोनों ही नॉन लीनियर है यहाँ तो. So one is multivariable and there is single variable. Okay, so this notation that you are using is in Latin with plus and so on, all the symbolic representation. Okay, so this is what it takes. It's difficult for students generally when you teach them algebra, so symbolic notation slightly difficult to explain in the first go, right? Takes time for them to absorb कि maths can be written symbolically. And you may not know, but this symbolic representation of equations was first written in Brahma-Sput Siddhanta. And this is even the development happened in India. So the modern algebra that you have studied, that you generally teach, all developed in India. Okay, this is the work of Brahmagupta. Please correct me if I speak something wrong. Okay, even polynomial equations, they all developed, can all be found here in his work. And fun part is how he wrote equations. Okay, but I want to come to it slightly later. So algebra is, as a subject, is a study of polynomials, right? ये हम लोग पढ़ाते हैं. And so we'll come to polynomial equations slightly later. Okay, what is so great about polynomials? हम algebra में इतना polynomial क्यों पढ़ाते हैं? क्यों what can you do with polynomials? नहीं, पहले पॉलिनोमियल्स का क्या करें तो जनरलाइज क्यों करें, मतलब हमें पता वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. हाँ, रिलेशन वन डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट, दो वेरिएबल का आप रिलेशन ला सकते हो. So what you are talking about are something called polynomial equations, but polynomials की क्या खास बात है? So this maybe you have never thought about it in this way.
But you can treat polynomials the same way you treat numbers. You can do arithmetic with polynomials in a very particular way. So you can add polynomials, you can subtract polynomials, ये सब आपको पढ़ाते हैं आप लोग. You can multiply them, you can divide them. अच्छा, numbers में हमने जब ये किया तो हमें क्या मिला यहाँ पे? इंटीजर से अगर काउंटिंग नंबर से हम शुरू करें, सो इफ यू ऐड देम यू स्टिल गेट इंटीजर्स ओनली, है ना. फिर सब्ट्रैक्ट देम तो क्या मिलेगा? नेगेटिव नंबर्स. यू मे, सो दिस, हाँ, इंटीजर्स में यू गेट नेगेटिव नंबर्स. ओके, देन व्हेन यू मल्टीप्लाई नंबर ही मिलेगा, पर डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? मे बी रैशनल्स. ओके, वेरी गुड. और क्या कर सकते हो नंबर्स के साथ? अभी क्या? पावर तो ठीक है, इंटीजर ही मिलेगा. रूट्स निकाल सकते हैं. वेरी गुड, है ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, रूट्स. तो इससे क्या मिला हमें? irrational. This led to the discovery of irrational numbers, right? Okay, इधर आ जाते हैं. पॉलिनोमियल्स में आप यहाँ तक तो पढ़ा देते हो. डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इन ग्रेड 9, है ना. स्क्वायर रूट निकाला कभी पॉलिनोमियल्स का? उसके आगे के, हैव यू एवर टेकन आउट रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स? ओके, दिस ऑल वर्क दैट you could do all this polynomial के साथ इतना सब कुछ कर सकते हो. You can perform all the algebraic operations or arithmetic operations is already 628 CE. Okay, ब्रह्मगुप्त को पता था. He wrote it. And he is the first person to write it. Okay, so in this symbolic form as well as in this algebraic form where you actually give a meaning to this operations. ठीक है. Square root, अरे अपने roots का क्या हुआ? Okay, this you will also not know. This is Fields-Medal's work. Okay, simply I'm going to tell you the name, and he's not, but okay, he's so Peter Scholz. Okay, so Fields-Medal is one of the highest medals you get in mathematics. Okay, so just for polynomials, from there you start taking roots, and you attach all the possible roots. Leads to a system called perfectoids. Okay, and perfect rings, and the process is called perfection. Okay, work of Peter Scholz. His collaborator is Bhargav Bhatt. Okay, he is an Indian American mathematician. Supposedly he was a cricketer before turning into a mathematician. When was this? Not this Fields Medal, but the previous one. So this one was not, but the previous one, which was in 2018. Yes, 2018. So this work is very recent, and it just stems from the idea that generally we don't take roots of polynomials. Okay, it's a very simple notion taken to, well, okay, far greater depths, and it's very useful in a subject called algebraic geometry. We will, well, anyways, where you are talking about algebra and geometry, it's already algebraic geometry. Okay. Okay. So corresponding to irrational numbers, there is something in mathematics which was very recently developed. Okay, just imagine if you are thinking very basic terms, you have to the process that I wrote, comparing very different notions. Okay, this is a step in mathematics called abstraction. Okay, this is what I would hope you can transfer to students, that they can see abstract properties of two different things together. Okay, all right. Let's go further. Okay, now I want to come back to polynomial equations. Okay, I haven't even talked about equations yet. So what is an equation? Now I want to bring to your attention really something which is very special about Indian mathematics and the idea where it stems from. So आप लोगों ने सबने सुना होगा कि जीरो तो इंडिया में हुआ था डेवलप, है ना. वो गलत स्टेटमेंट है. So zero is found in almost a lot of civilizations. ठीक है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, इंडिया के साथ और भी बहुत सारे टाइम में, कुछ जगह हमसे भी पहले होगा शायद. But what it was used for is the most important thing. Okay. So what is zero? You can think counting place में, अगर when you are doing basic counting, आप count कर रहे हो, तो जीरो को आप मानते हो कि वो किसी भी क्वांटिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता, है ना.
0 इतनी चीज़ है आपके लिए, पर जब आप ये चीज़ लिखते हो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, इसमें 0 का क्या मतलब है? ठीक है, अब आपने बोला कि आप x और y को मानो कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है, इसमें 0 का मतलब वो तो नहीं हो सकता सिर्फ एज अ प्लेस होल्डर, है ना? So what this equality does is something phenomenal. It relates, the way I was telling you, it relates arithmetic operations feeded with values from the numbers into polynomials to numbers. तो वो कहता है ये इक्वालिटी नंबर्स में आती है और ये 0 का मतलब है एज अ algebraic operation. So you can add 0 to things, you can subtract 0, उससे कुछ होता नहीं है, but that is an important leap in development of algebra, where you actually tell कि how to treat 0 as an algebraic property. Okay, that is the discovery of Brahmagupta. So that is from where polynomial equations start. And what is interesting about polynomial equations is their solutions. पावर ऑफ 0, 0 की पावर 1 लेते हैं ना हम. पावर ऑफ 0 मतलब 0, 0 पॉलिनोमियल टू द पावर 1 इज 0. हर चीज अच्छा, so degree of 0 polynomial is 1. अरे हाँ, वो मुझे पता है, बुक में गलत लिखा है. It is defined. It is very well. It is 1. I think somebody also asked me in my students once this question. हाँ, very good. I will very quickly explain you what it means for a degree of a polynomial. Okay? So let us consider a polynomial. ये रहा अपना polynomial. Degree क्या है इसकी? हाँ. So if an is not equals to 0, then n. और इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, ठीक है. So now let us say a0 है. So this generally, so basically it is for all these terms. But a0 constant term अगर है, तो what do you do? It is 0 degree. 0 degree, but without. Oh. अरे I understood what is your issue. Okay, sorry. So degree of a. Degree of phi equals to 0, but degree of 0 is not defined. No, I generally take it to be 0. I remember correctly. Sorry, I was making a mistake here. So because I treat it as a constant. So you can treat it as a constant term, right? Degree of a0 is 0. So if you define it in this way, it will work. Okay? Should work. Okay, let's go back. We will not worry too much about it today. So now you have this, our favorite equation, okay? ax plus by equals to 0. So what do I do when I solve a polynomial equation? I will substitute the values and try to trial and error method is the first way we go about. Okay, let me write to you a very classic equation. इतना देखा है हमने 2 दिन में इसको कि you will know this. ठीक है, ये तो बहुत देखा है, 2 दिन से यही देख रहे हैं. है ना, अपना पाइथागोरस थ्योरम का है. अच्छा, I want to solve this equation. And I want to solve this equation in a very particular way. I want to solve this with only integer solutions, है ना? और कुछ नहीं. I just want to have integer solutions because we want to know all the Pythagorean triplets, है ना? हमने सारे पाइथागोरस के ट्रिपलेट निकाले हैं. वो भी पाइथागोरस ने ये प्रूव नहीं किया था, लेकिन कोई बात नहीं.
तो ट्रिवियल आंसर क्या है, मतलब सबसे आसान आंसर क्या है? अरे उससे भी आसान है। हाँ 3 4 5 निकालने में मेहनत लगेगी अभी, ठीक है। 0 0 0 भी है पर वो इंडिट मतलब वो भी है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। वो एक सोल्यूशन है, इसके सिवाय 0 0 के साथ 2 और आते हैं बस, राइट? इसके सिवा और कोई 0 के साथ नहीं आएगा। In some sense it will come, okay? 0 5 0 and 0 5 1 5 5 क्यों, कुछ भी ले लो यार, हाँ है ना? ओके, अब these are uninteresting solutions, right? ये तो एक पता है तो हजारों पता चल जाएंगे। So they are, what I will do is do something else, okay? I will change and I will have x over z अभी ये familiar लग रहा है इक्वेशन, so I will ask z to be not equals to 0, ठीक है? वो केस डिस्कार्ड कर देते हैं, वो 0 0 0 में सॉल्यूशन आता है। तो ये if this is the situation, okay, this is a very familiar object for you, right? Correct? Circle of radius 1, ठीक है? So now I wanted to find a solution for this equation, right? I converted this equation into this equation. तो अगर इसके integer solution है तो इस equation का वो integer solution होगा, होगा, है ना? और अगर इसके rational solution है, rational बोल रही हूँ मैं, है? तो इसका integer मिल जाएगा आपको। डिनोमिनेटर क्लियर करना है अपने को, बस, है ना? तो this problem is equivalent to solving this for rational solutions. Okay? ठीक है? सब मानते हैं ना ये बात, ठीक है? सिंपल है वक्त ये, तो निकाल दो सारे फिर। Tell me all the rational solutions, okay? Should take हाँ हाँ नहीं, z को नहीं हिलाना अभी, सर्किल तो अपना फिट है, सर्किल फिट हो गया अपना, सर्किल पे कुछ नहीं हिलाना अब, सर्किल ये रहा। नहीं अब नहीं होगा, ये इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, इसमें तो रेडियस फिक्स हो गई 1। और निकालने भी आपको रैशनल सॉल्यूशन है। अभी मेरे को मत बोलना कि कोई भी पॉइंट ले लो सर्किल पे, मुझे पता नहीं होगा कि उसका रैशनल कोऑर्डिनेट है कि नहीं है ना? तो क्या करूं? और भाई पाई क्या आ गया, बीच में आ गया, पाई नहीं चाहिए अपने को, पाई पसंद नहीं अपने को। 5 अच्छा 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 उन्होंने एक बताया, मैं तो कहती सारे बताओ, सारे एक साथ। मल्टीपल तो नहीं होंगे, नहीं पर वो रैशनल नहीं आएंगे, करके देखो, नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? अगर 1 2 ले लूं, नहीं आएंगे। लो तो if you start with one rational, this may be irrational because you are taking square roots at some place, right? हाँ अरे सर्किल तो पर रैशनल क्यों होगा साइन थीटा? रैशनैलिटी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, नहीं होगा वो। ऑल पॉइंट्स इन द सर्किल आर नॉट रैशनल, तो सारे पॉइंट्स दोगे तो भी मुझे मतलब इट्स सो रॉन्ग दैट आई डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, so here's the first trick in geometry that will help you solve a very algebraic equation, and I'm going to tell you a very geometric trick about it. अब आपके पास ये पॉइंट पता है आपको क्या है सर्किल पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या है?
ये सॉल्व करते हैं ना ये इक्वेशन को, रैशनल सॉल्यूशन है. ओके, यू जस्ट नो वन. ओके, एंड दैट इज ऑल यू नीड. ओके, और ये पॉइंट भी आपको पता है. अब I took one line, ठीक है, extend. इसके कोऑर्डिनेट्स लेट मी टेक दिस एज a कॉमा, हाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या लूँ? सो व्हाट इज दिस लेंथ? लेट मी मार्क दिस लेंथ एज a. ये रेडियस क्या है? 1. एंड लेट मी टेक दिस लेंथ एज b. करेक्ट. a x का है. ओके, कैन यू टेल मी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? फटाफट बता दो. बताओ बताओ. अच्छा, इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना? तो बता दो. c 1 आएगा. अरे मैंने कुछ तो गलत कर दिया शायद यहाँ पे. आई विल जस्ट चेंज दिस. सॉरी, हाँ मैंने आंसर में गलत लिखा था, सो आई विल जस्ट मेक इट. तो अब इस लाइन का इंटरसेक्शन और इस सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है b और a है. अब अगर स्लोप m रैशनल है तो कोऑर्डिनेट्स रैशनल होंगे, राइट? m अगर रैशनल है तो कोऑर्डिनेट्स रैशनल होंगे, कोऑर्डिनेट्स रैशनल है तो m रैशनल होगा. I have listed out all the solutions for you. They are just intersection of this line with the circle. Okay, so special line, it's a line with rational slope. So always if you take rational slopes, you will get all the lines. So this is a trick that we are using, which uses something very special about geometry, which is the shape of the solution set. The shape is a circle. So what's very interesting about polynomials, equations in particular, is that the solution set has a shape. है ना, shape है ना. अगर मैं इसमें से काफी सारी चीजें भी बदल दूं तो भी like if I change this equation in some slightly different way, I will still get a similar shape. Let me write down fun equations for you. So for example, an equation of this form, है ना, it's a equation of a line, है ना. हाँ, line passing through origin, है ना. इसमें a और b को कुछ भी डालूं, shape तो unless 0 0 है, shape will always be that of a line. Similarly, in the equation of a circle which I erased now, if I had this, wherever I took a center, इनमें से कुछ भी ये तीनों को vary करूँ, the shape will remain a circle. So similarly, if I have a polynomial equation like this equals to 0, most of the cases, however I vary coefficients,
Okay, the shape will not change much. Okay, and so the study of shape of the solutions is a subject of algebraic geometry. Okay, so the algebra comes from the polynomial equations. Okay, and the geometry comes from the geometry of the solution set. Okay, so a lot of in situations, although shapes may vary a little bit if you change slightly the equations. Okay, you have to find precise conditions under which your shape remains the same. Okay, this is the game that we are trying to play. Okay, all right. So what has to do with the coefficients? Is the shape has to change? So and certain coefficients will give you different kind of shapes. So for example, if you have a quadratic equation, one time you will get something like this. Sorry, in one variable you will get parabolas and hyperbolas. These shapes will change slightly. पावर चेंज होने से शेप चेंज होगा या फिर पावर चेंज होने से तो डेफिनेटली शेप चेंज हो जाएगा. कोफिशिएंट चेंज होने से शेप का मतलब साइज चेंज हो सकता है. हाँ, पर कभी कभी शेप भी चेंज हो सकती है. Everything is a conic section, so you are not really changing the shape. No, that is it's a higher concept. Okay. That one comes later if you put it in more geometry. Okay. I wanted to plot some stuff, but I think I will skip that part. But okay. हाँ, वो सही है. हाँ, may or may not have a solution. That is true. Okay. दो एक साथ होंगे. अगर एक होगा तो दूसरा भी होगा. नहीं, even में. हाँ. Okay. That will take us slightly more into algebra. I want to say more. Okay, here. तो ये clear है. Solution space का shape होगा. ठीक है. We will have a lot of interesting shapes. और एक जो आर मतलब क्या कर्व आता है ना, जैसे लाइन नो लाइन में एक भी कर्व नहीं. फिर जैसे पैराबोला मतलब पैराबोला में क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसमें एक ही कर्व आएगा. मतलब पैराबोला तो कर्व एक ही जगह मतलब टर्न हो रहा है ना. नहीं. So that is a different notion. It's a notion of curvature, and I don't want to bring it here in algebraic geometry. That is more appropriate for differential geometry. रिलेशन है जीरो नंबर ऑफ जीरो के साथ इससे नहीं. We will not. I will maybe answer it later for you, but here it will take me too far. What I want you to notice is shape of a solution set is very interesting. So that is a geometric property, right? Shape of the solution set is a very geometric property. You agree? है ना? Now I want to tell you that sometimes solution sets or this solution space can have a very algebraic property as well. So which in particular means that if you add, ठीक है, अगर सर्किल के दो सॉल्यूशंस को ऐड करोगे तो क्या सर्किल का पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना. ये तो एकदम बेकार आइडिया, मतलब इससे वाहियात आइडिया कोई आ ही नहीं सकता किसी के दिमाग में. बट लेट मी टेल यू दैट इट्स वन ऑफ द डीपेस्ट आइडियाज दैट गोज इनटू algebraic geometry or any part. We write an equation for you and maybe we will see some plots. Okay. Here's the equation. Correct? n is integer लेना है आपको, ठीक है? या फिर आप को भी नेचुरल नंबर ले सकते हो. इसको प्लॉट करके देखें कैसा दिखता है. We have to feed in some particular value, so let me put 3x square plus
एक और कर दूं? नहीं, हाइपरबोला तो नहीं है उसका, देखो आप इतना अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ रहा है शेप में, है ना? नहीं, 1 की जगह नंबर नहीं डालना, वो सारा खेल बिगाड़ देगा हमारा। बदल के देख लो भैया क्या होता है। ठीक है, तो दिख रहा है हमको क्या हो रहा है। अच्छा, ये इसके हमें रैशनल पॉइंट्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? So it's not much different from what equation we were doing, right? ये अपनी पाइथागोरस की इक्वेशन है, बहुत सिमिलर दिखती है, एक कोएफिशिएंट ऐड किया है मैंने बस ऑलमोस्ट, ठीक है, और एक प्लस माइनस का थोड़ा सा चेंज किया है। अभी सर्किल से वो कुछ और ही शेप बन गया, आई डिडंट डू मच। ओके, what can you say about finding rational solutions to this equation? There is a shape, okay, maybe this time geometry will not help you, ठीक है? नहीं, मतलब क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं, वो सॉल्यूशन जो होंगे वो सब रेशनल ही होंगे, ऐसा थोड़ी है, नहीं, कितने सारे irrational नंबर लिस्ट में। रियल सॉरी, ये तो है, दिख रहा है तो रियल सॉल्यूशन है, अपने को रैशनल चाहिए। ओके, सो दिस इज, so last time what did we do a trick? We started with one solution, and then we generated all using some fun geometric property here, ठीक है? इसमें वो काम नहीं करेगा, but what Brahmagupta did, so this was the equation that, अरे यार spelling, हाँ, okay, what Brahmagupta did was he used two solutions, okay, and generated a third solution out of them, okay. So you start with two solutions, so say S1 is a solution, S2 is a solution. You would introduce an addition law, okay. This addition law is not the usual addition of points in the coordinate geometry. It's a slightly different modified version of addition, but he introduced this law and created a new solution, and basically he showed that all the rational solutions can be constructed in this way, okay. So he introduced something which is called the Bhavana law, okay, of composition, okay. Now you would think ये तो बहुत particularly special equation के लिए कुछ particular सा कर दिया, okay. Hey, this name of Bhavana, this law gives the name to the Bhavana magazine that we wrote yesterday about, where you can find a lot of history of mathematics articles, okay. And so it's a composition law. It's slightly non-trivial, so I will not write it on the board. But you can add two solutions and get a third solution, okay. Add in a slightly different sense. That is why I used a different notation for addition, not the usual addition, okay. Let me write another equation for you, okay. You will think that this is very special. I will tell you it's not so special. बहुत simple equation है, हाँ? I wrote another equation for you. इधर सब degree 2 में था, I increased the degree to degree 3. Okay, this is a 3 degree equation, हाँ? किसी ने देखी है कभी ये equation? जब हम कॉलेज में आते तब का अलग था वो, But not something that is very difficult to write, okay. It's very easy equation, okay. And the non-trivial fact about this is, okay, which is really difficult and comes out of the fact that you can add solutions
of this equation. क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ऐड again with a different addition operation. So you can define a new addition operation and add the points to get the new solution. So all the points on this solution set are basically forms a group. Okay, I don't want to say the word group anymore. No. Okay, yes, so they form a set which you can add over. So if you add 2 solutions, you will get a third solution, always. Any 2 points. Doesn't matter if it's rational, complex, irrational, jo chahiye kar do, you will get third solution always, okay. This equation is one of the most famous equations and goes by the name of elliptic curve. Okay. This curve has a lot of applications in cryptography, so encryption algorithms, okay. Really useful in number theory, algebraic geometry, everything. Okay. How many Fields Medal have been given to working on elliptic curves? Any guesses? I'm asking how many, okay? I'm not asking like there is only one, okay? So Manjul Bhargava was awarded for working on elliptic curves, and what he did, I will tell you, it's very beautiful work that he did. Question that he answered is, how many rational solutions does an equation of this form has? Okay? The question is this simple. How many rational solutions? So I just have to find rational solutions to this equation. Okay? That's one guess, good. Everybody thought it was infinite. So to the surprise of everyone, what Manjul Bhargava showed, that there are a lot of curves which have only one rational point. Okay? This work is joint with Arul Shankar. Plus Manjul Bhargava. So there are a positive proportion, so to be precise, the result says there are a positive proportion, like some of the elliptic curves will have only one rational point, some will have infinitely many rational points, okay? And a typical curve will have only, will actually have infinitely many, but there is a lot of them which will have a only one rational point, okay? Degree क्या था इधर? 3, cubic पे पहुँच गए हम, ठीक है? Degree 4, he showed the same result for degree 4. थर्ड के इक्वल होगा नहीं, वो तो हमेशा ही होगा. What I am saying है, there is only one solution which will have rational coefficient. जिसमें x और y दोनों rational number होंगे. Okay, positive of them are infinitely many. कुछ cases में infinitely many होंगे, हाँ, but like, so I can write the general equation. Sorry, this will lead to confusion. इसके ऊपर नहीं, I will tell you where it is number bound. Okay. So so this is one work. So abhi this was degree 3. Okay. This is degree 3. That is all that he showed. He has done lot more work. Okay. So there is one of his work which is very much inspired more by the Brahmagupta's Bhavna law, but I think it will take me too long to explain today. So maybe some other time I will explain you his other work on composition laws with higher degree polynomials. Okay. But what I want to explain is something else again. Okay. And the work I want to bring. Okay, so this was degree 3. Achha. So if I write some equation of the form, so something for degree 10, or I want to write something y square, something degree 4 polynomial, okay, or y square equals to some degree 10 polynomial, okay. So degree y square equals to degree 4 polynomial means something like this. So y square degree 3. So curves of this form are called hyperelliptic curves. इनका नाम है. अच्छा, इसके ऊपर भी मंजुल भार्गव का सेम रिजल्ट था कि कुछ के पास एक ही रैशनल पॉइंट होगा, कुछ के पास इन्फिनिटली मैनी होंगे, ठीक है.
डिग्री 10 के ऊपर उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है. हाँ, so then he jumps to degree 10, but before I jump to degree 10, here's another result by another Fields medalist. Okay. So if you have an equation, the form say, let's say one of them, but you can take more general case where degree greater than equals to 5. Any guesses how many rational point this will have? An equation of this form? इसमें ना कुछ के पास था infinitely many points. What about this? ठीक है. So this is the work of Gerd Falting. So Gerd Falting's Fields medal. Okay, I may write another equation. ठीक है, ये equation सबने देखी होगी. Okay, it works also for this. ये पहचान में आई है? This you recognize? Fermat's last theorem. ठीक है? So Fermat's last theorem was a more general result, which is x to the power n plus y to the power n equals to z to the power n. The question was, how many rational solutions does this equation admit? है ना? So Gerd Falting's Fields medal, only finitely many solutions. Rational solutions, okay? This was the best achieved result till quite some time, that equations of degree greater than 5, they only admit finitely many rational solutions, okay? So he's a German mathematician. Let me come back slightly more and tell you, this equation in particular admits क्या? नहीं, actually what is happening is you do the same trick that we were doing with Pythagoras. ये z को नीचे ले आओ, है ना? Because एक वो trivial solution does not matter for us, okay? वो एकलौता solution है, very special case. So this admits no rational solution other than ये 0, 1, 1 type के. The trivial solutions are always there, but no non-trivial solutions. They don't admit any other rational points. This was the work of Andrew Wiles. And Andrew Wiles is the PhD advisor of Manjul Bhargava. Okay? So he's the PhD advisor of Manjul Bhargava. Okay. So, by the way, now, you know, degree greater than 5, there are only finitely many. So let's come back to Manjul's work on degree 10. He shows that 99% of the time, or 99% of the polynomial equations of degree 10 don't admit any rational solution. Okay? So in time, so don't admit rational solutions. Okay? हाँ. So it's a result also involving probability. पढ़ते नहीं हो ना तुम लोग probability. इसीलिए नहीं मिल रहा है fields. Okay, so it's a result which actually gives you a bound. Okay, that was the bound you were asking about. 99% of the time you pick up a polynomial of degree 10, it will have no rational solutions at all. Okay. अच्छा, ये तो हमने देखा थोड़ा algebraic structure था because we started with playing with some algebraic structures on equations. These solution sets may or may not have a algebraic. अभी बीच में उनको नहीं पता, तुम्हारे लिए खाली है. So it's an open question, okay? These are the best known results. You can improve upon them a lot more, okay? And they're very simple to explain. It's not very, like, they are not very difficult to state, but the proof is quite involved and requires a lot of techniques from higher mathematics, but in general, at least you can get a gist of this. Okay, so now I want to bring in more geometry again. This was more algebra, okay? Because abhi wo Neena Gupta ka kaam baki hai. So this was Manjul Bhargava's work. I will erase this part.
So let me explain you the work of more geometric work. Okay. Let me take a circle. Okay, I have a circle. I can stack circles over each other, right? For every and let me take a line. इससे ज़्यादा हम आज कुछ नहीं करने वाले, लाइन और सर्किल पे खेलेंगे, ठीक है? So every point on the line attach a circle. तो क्या बनेगा? तो आपके पास एक लाइन है, ठीक है? हर लाइन पे एक पॉइंट है, उसके बदले में आप एक सर्किल लगा दो, ठीक है? जैसे कि हमारी ये लाइन थी, इसका ये पॉइंट था, इसके बदले मैंने यहाँ पे सर्किल लगा दिया, ठीक है? अब ऐसा हर पॉइंट पे कर दो, तो क्या शेप बनेगी? हाँ, सही बोला लोगों ने, ओके. सो आई कैन राइट लाइन क्रॉस सर्कल इक्वल्स टू cylinder, right? I am defining a kind of multiplicative operation on the geometric objects, okay? There is some algebra creeping in slowly. Okay. So, हाँ? नहीं, ये सिलेंडर ही बनेगा आपका हर पॉइंट पे. अपर लोअर क्या हुआ? एक ही सिलेंडर है ना, लंबा साइड के लिए ड्रेस था. नहीं, पर आप हर एक पॉइंट पे जब सर्कल बना देंगे तो वो सिलेंडर हॉरिजॉन्टल बनेगा और नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बनेगा. नीचे क्यों बनेगा? एक लाइन का एक पॉइंट है, उस पे कितने सर्कल उधर से मतलब एक ही रखते हैं. बस ऐसे ही. हाँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब पैर सर्कल बनेगा. नहीं, पैर नहीं आएगा, एक ही आएगा. Line and circles. It's a non-trivial construction. Think about it, okay? This, all you will get is a cylinder. Okay. अब आप मानो आपने सर्किल की बजाय कोई और कर्व रख दिया, ठीक है? आपके पास कोई अटपटा कर्व था, ठीक है? Now all you did was again you took your line, removed the point और उसकी बजाय ये कर्व रख दिया, ठीक है? कुछ भी रख दो, वो आपकी मर्जी, ठीक है? पर इतना भी कुछ भी मत रखो. Let's keep it a curve which is a solution of an algebraic equation, okay? कोई भी कर्व हो ना, algebraic equation का solution होगा, उसको रख देते हैं. Just see. So the question is, if the corresponding shapes, तो अगर ये कर्व को मैं D बोलती हूँ और अपना सर्किल C था, लाइन L थी, if L क्रॉस C जो हमें सिलेंडर मिला, if this is, इस इक्वालिटी को हम अभी डिफाइन करते हैं, सेम एज D क्रॉस C, sorry, D क्रॉस L, okay? This is same as D cross L. Then is C equals to D. मानो आपने कोई भी शेप यहाँ पे रख दी, कोई भी कर्व रख दिया, फिर से आपने ऐसा शेप बनाया और मानो वो शेप सेम आता है, ज्योमेट्रिकली एक ही जैसे दिखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन इज C is equals to D. तो क्या आपका जो ओरिजिनल कर्व था वो सर्किल था? So basically I am asking कि अगर मैंने ऐसा मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया ज्योमेट्रिकली, तो मैं क्या ये लाइन कैंसिल कर सकती हूँ? हाँ, पर जीरो नहीं बनेगा, वो तो बात ठीक है आपकी. हाँ, जीरो नहीं आना चाहिए, वो बात ठीक है, पर ठीक है, we will rarely get zero. These are geometric shapes. So this is a very famous conjecture, was a very famous conjecture in algebraic geometry. That is why I reduced to the some sense here. And called Zariski cancellation conjecture. In general, you can increase the dimensions as well. So it's just the outer shape of it, okay? Empty circle है, अंदर से hollow है, ठीक है? So basically, when I say circle, I only mean the solution set of this equation. Okay?
think algebraically. I have very precise meanings for these objects algebraically. These are all solution of algebraic sets, so solution of all algebraic equations. I can increase the complexity and ask if multiplying by L or multiplying by, एक हमने लाइन करी, अब हमने प्लेन में भी ऐसा कर सकते हैं अपने, प्लेन का पॉइंट हटाओ, उसकी बजाय वो कर्व हर पॉइंट पे डाल दो, ठीक है, डिफिकल्ट टू इमेजिन बट इट यू कैन डू दिस, ठीक है. So it was an open question for very very long time, ठीक है, Zariski cancellation problem. This was solved by Neena Gupta. Okay, this is the work of Neena Gupta. So she won Shanti Swarup Bhatnagar, which is the highest medal in India for achievements in mathematics research. Okay, for proving that this conjecture is false. Okay, so which means there exist different curves which are completely different, so they are not same geometrically. But once you multiply them with suitable planes or lines, you will get plane, line or higher dimensional objects, but simple ones, okay, very simple ones. They will turn out, they will become same algebraically, okay. So this was the, Neena Gupta answered this, no, she won't, okay. What had Zariski posed? So Zariski posed that if you cancel these L's and get that C is equals to D. So if you have two different curves and such that the product with L or any, what I will precisely put some Rn, if they are same, then is C equals to D. And even you can increase the complexity here. It need not be curves. You can have any higher dimensional polynomial, high degree polynomial zero set as well, multivariable. तो हम इक्वेशन फाइंड करते हैं पॉलिनॉम क्वाड्रेटिक है, तो फिर वो जो हम एक कांस्टेंट k लगा दें, तो क्या वो k अलग अलग हो सकता है, तो वो सॉल्यूशन सेम रहते हैं? नहीं, सॉल्यूशन चेंज रहेगा पर सॉल्यूशन का शेप मतलब चौड़ा बड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, पर वो हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा. शेप इम्पोर्टेंट. हाँ, ये इक्वालिटी इसीलिए इक्वालिटी कोटेशन में मैंने लिखी है कि वो थोड़ा टू बी मेड प्रिसाइज. But this is the gist of geometrically, this is the flavor of her result, okay. Let me finish the talk with a open question, okay. And this is an open question by two very famous Indian mathematicians in algebraic geometry. One was supposed to give you a talk and he cancelled. So Abhyankar, so tie conjecture. Okay, so he was supposed to talk last night, but everybody ran away. Okay. So these are one of the, well, they are currently working now in, so Abhyankar is no more, he is working in US, so he is Indian American. Okay. And the question is very simple. आपके पास ये लाइन है, रियल लाइन है ना, अपनी रियल लाइन है, और अपने पास ये रियल प्लेन है, ठीक है. सो दिस इज R, दिस इज R2. सो आई इम्बेड R in R2. मतलब मैं R को R2 में कैसे फिट कर सकती हूँ, तो आई कैन फिट इट एज एनी लाइन, है ना. ओरिजिन से पास करना भी कोई ज़रूरी नहीं है, कैसे भी मैं एक लाइन को घुसा सकती हूँ. हाँ, आई विल फिनिश इन 5 minutes. Now you can transform this line to become the x-axis. So you can always transform any line in R2 to x-axis. Transformation, you can do this rotation and translation. So these are the allowed transformations. So any embedding of R in R2 is can be can you do this in higher dimensions, okay. So given R2
इनसाइड R3, तो ये प्लेन है, ठीक है, 3 डायमेंशन स्पेस है अपना, ठीक है। अभी मैंने प्लेन रख दिया उसके अंदर, कैसे भी रख दिया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसको कैन यू मेक इट इनटू XY प्लेन, ठीक है, दैट्स एन ओपन क्वेश्चन, ओके। In general, even something in Rn minus 1 to Rn, हाँ, correct x to xn minus 1 plane, ठीक है। This is an open question. Solve the Abhyankar Satai conjecture. अभी आपको लग रहा होगा इतना आसान क्यों रह गया, ठीक है, आप feel free to try. नहीं, प्रूव नहीं किया है, क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, आंसर नहीं पता हमें। सेकंड में हो जाता है तो कर सकते हो आप ट्राई, सेकंड में चांस ज़्यादा है पर ये हो जाएगा, पर इसके ऊपर पर आप बच्चों को बता सकते हो कि ये मज़ेदार सवाल है। वो जो है ना वो कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये सब फर्स्ट लेवल में है। So this was all that I wanted to bring you to some really easy open questions which you can still very simply see and introduce you to the work of कुछ अच्छा हमारे जो मैथमेटिशियंस हैं, मंजुल भार्गव के वर्क एंड नीना गुप्ता के वर्क के साथ I wanted to introduce you in slightly simpler terms. So since the goal is not just to wait till they are become history, थोड़ा प्रेजेंट में भी सीख लेना चाहिए मैथ्स, है ना, तो ओके, सो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस